Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम 17 जून 2024 को अनाउंस होने वाली जो एक सिपरी इदारा है उसकी एक रिपोर्ट के ऊपर बात करेंगे। सिपरी इदारे ने एक रिपोर्ट पब्लिश की विच इज़ रिलेटेड टू द ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेंड्स। दिस इज सिपरीज ईयर बुक 2024 which is an annual assessment of the state of armament, disarmament and international security. नाज़रीन, ये एक एनुअल रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा हर साल रिपोर्ट आती है। इसमें ग्लोबल न्यूक्लियर ट्रेंड्स और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर आर्मामेंट जो ट्रेंड्स हैं और डिसआर्मेंट के जो ट्रेंड्स हैं और उसको जो सिक्योरिटी मामलात हैं उसके ऊपर एक असेसमेंट जो है वो ये रिपोर्ट देती है। ये रिपोर्ट की जो टाइम पीरियड है दैट इज़ जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक। although it is published in June, but obviously it was compiled, having a compiled data until January 2024. अब इस रिपोर्ट के अंदर जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात की गई। मैं इसमें दो बेरे एस्पेक्ट पे बात करूंगा, एक तो ग्लोबल एस्पेक्ट पे बात करेंगे और एक साउथ एशियन में इंडिया पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करेंगे कि क्या ट्रेंड्स रहे हैं। और तीसरी बात जो हम करेंगे दैट इज द एनालिसिस ऑन दैट, ये रिपोर्ट कहती है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और ये रिपोर्ट को हम किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये क्या ट्रेंड शो करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। बट बिफोर आई गो ऑन टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिपरी का इदारा है क्या। What is this SIPRI Institute? I think SIPRI is one of the many international think tanks that work for peace and security. It's an acronym for Stockholm International Peace and Research Institute. और ये जो SIPRI का इदारा है, it is one of the most credible institutes in the Western world या globally हम कह सकते हैं on matters related to security and peace. ये दुनिया भर में conflicts को, wars को, military और nuclear trends को जो है वो मॉनिटर करता है। उसके बारे में ना सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है एंड कलेक्ट करता है बट आल्सो प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी एनालिसिस ऑन दैट। तो सिपरी की जो रिपोर्ट है इट इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपोर्ट्स हिस्टोरिकली। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो सिपरी का जो डेटा होता है ये यूज़ किया जाता है बाय डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स, स्कॉलर्स, एकेडमिशियंस एज वेल एज द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेटेड फील्ड्स। ये जो रिपोर्ट है सिपरी की, इसी की बुनियाद पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर भी ऑब्वियसली जो है वो डिफरेंट स्टेट्स को इंडिविजुअली टच किया गया है। हम इंडिविजुअली तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात करेंगे, उसके बाद हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान, अगर मैं साउथ एशिया के हवाले से बात करूं तो दिस रिपोर्ट नोट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो कि हेडलाइंस बना तमाम मुल्कों के अंदर, अखबारों के अंदर भी और स्पेशली साउथ एशिया के अंदर। दैट इंडिया से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो इंडिया के बारे में सबसे कहा गया दैट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1999 India had developed more weapons, nuclear warheads or weapons than Pakistan. It reports that 172 nuclear warheads are there with India this year, which is again an increase of 8 nuclear warheads from last year. 172 के जो warheads हैं they are 2 greater than Pakistan. Obviously Pakistan, it means that Pakistan has 170. Last year भी 170 थे, अब भी 170 हैं. So there is no change in Pakistan's nuclear warhead position, while India has increased and surpassed Pakistan for the first time since 1999. अब इंडिया के वाले से कुछ और बातें भी की गई। फॉर एग्जांपल दिस रिपोर्ट आल्सो सेज दैट इंडिया इज ट्राइंग टू स्ट्रेंथन इट्स न्यूक्लियर ट्राइड एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग इट्स एंड पावरिंग इट्स द सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, पर्टिकुलरली सी सबमरीन की बात की जाए या न्यूक्लियर सबमरीन की बात की जाए, उस हवाले से इंडिया जो है अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दिस रिपोर्ट आल्सो सजेस्ट दैट इंडिया इज आल्सो इंप्रूविंग इट्स डिलीवरी सिस्टम्स, डेवलपिंग मिसाइल्स विद अ लॉन्ग रेंज, ICBMs इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का टेस्ट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली उसमें रेफरेंस किया गया अग्नि 5 का। बिसाइड दैट जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे मर्व टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंट किया गया इंडिया की तरफ से 2024 में, वो इस रिपोर्ट में जिक्र तो नहीं है बट इट इज रिपोर्टेड इन दिस सिपरी रिपोर्ट दैट इंडिया इज डेवलपिंग द मर्व टेक्नोलॉजीज एज वेल। एंड लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो अक्सर अननोटिस किया गया पाकिस्तान के अंदर, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज नॉट डिप्लॉयड बट इट इज ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन in which it wants the mating of the warheads with the missiles, which means that currently the Indian warheads and missiles are segregated, so they're not on high alert for operational capabilities. But in future, India, there are certain indicators that suggest that India is moving toward that direction. जिसमें currently दुनिया के सिर्फ 3 मुल्क हैं, one is US, Russia and China के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा गया that China has been moving towards mating of the warheads along with the nuclear delivery systems, which means that there is a possibility that India would only have to click and fire the nuclear missiles. India is moving toward that, although it has yet not operationalized this mating of the two. अब अगर पाकिस्तान की बात करें नाज़रीन, तो इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है पाकिस्तान हैज़ बीन स्टैग्नेंट ऑन प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर वॉरहेड्स। हमारे लास्ट ईयर जनवरी 2023 में भी
170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, अब भी न्यूक्लियर वॉरहेड 170 ही हैं। एंड अगेन लाइक इंडिया, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड भी स्टॉक पाइल में है। देयर इज नो मीटिंग टेकिंग प्लेस, और ना ही इस रिपोर्ट में कोई ऐसी इंडिकेशन थी दैट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू मैच is trying to actually deploy the warheads on missiles। ऐसी कोई इंडिकेशन पाकिस्तान के बारे में नहीं की गई, अनलाइक इंडिया। बट पाकिस्तान के बारे में यही कहा गया, पाकिस्तान चूंकि लैक करता है एक इफेक्टिव सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, शॉर्ट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में, देयरफॉर पाकिस्तान इज ट्राइंग टू अचीव दैट कैपेबिलिटी। हम मूव करें टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। जो क्रूज मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन हैं, अगस्टा सबमरीन, उसको हम जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू अ बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, ताकि एसएसबीएन में कन्वर्ट करके एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमारे पास कैपेबिलिटी आ जाए, बट वी डोंट हैव इट येट। Beside that, this report also says that Pakistan is strengthening its Triad, the same thing, air, land, and sea-based. However, this report generally gives us a very clear trend that there is a nuclear arms race going on in South Asia, albeit with India taking edge over Pakistan, and particularly in quantities of nuclear warheads. अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूँ नाज़रीन, तो दिस रिपोर्ट इज़ हेवीली फोकस्ड ऑन द न्यूक्लियर ट्रेंड्स इन यूएस एंड रशिया, ऑल्दो इट आल्सो टॉक्स अबाउट द अदर न्यूक्लियर स्टेट्स एज वेल। टोटल 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग 8 डिक्लेयर्ड एंड 1 इजराइल दैट इज़ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट। बट ग्लोबल सेंस में भी यूएस और रशिया के ऊपर इसलिए बात की जाती है बिकॉज दे कंट्रोल, दे हैव मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स, एंड ऑब्वियसली द वर्ल्ड्स मोर देन 90% ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियर वेपन्स आर आल्सो देयर विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। बट अगर मैं यूएस रशिया के हट के बात करूं, ग्लोबल लेवल पे बात करूं, तो दिस रिपोर्ट सेज दैट अ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इन द वर्ल्ड आर 12,121 warheads, out of which 9,585 are in military stockpiles for potential use. However, out of 12,121, around 3,904 of those warheads have been deployed with missiles and aircrafts. लास्ट ईयर के लिहाज से इस साल इन डिप्लॉयड मिसाइल के साथ, डिप्लॉयड वॉरहेड के साथ जो है वो 60 से ज़्यादा है। बिसाइड दैट जो रेस्ट हैं, जो रिमेनिंग हैं, जो दोनों में नहीं आते, दे आर इन द सेंट्रल स्टोरेज। नाज़रीन, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट इस साल जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनकी तादाद बढ़े ना बढ़े, लेकिन उनकी ऑपरेशनलाइजेशन की जो डिप्लॉयमेंट है उसमें यकीनन इजाफा हुआ है। 60 आर मोर डिप्लॉयड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिप्लॉयमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो ना यूएस का ना रशिया का है, बट रादर इट इज़ दैट ऑफ चाइना। यूएस, रशिया भी, बट पर्टिकुलरली चाइनीज जो हैं, दे हैव डिप्लॉयड मोर nuclear warheads on their missiles, which shows the changing geopolitical scenarios and dynamics which compel China to deploy its nuclear warheads. It also shows the growing global powers rivalry in the particular region of Indo-Pacific as well as globally. अब अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूँ, तो दिस रिपोर्ट सेज दैट यूएस हैज़ अराउंड 5,044 nuclear warheads, while Russia has 5,580 warheads. जैसा मैंने कहा कि इस ट्रेंड में एक ट्रेंड ये है that US Russians have been now deploying the nuclear warheads at a greater pace than the United States. Thirdly, about China, this report also says that China's nuclear weapons have increased from last year's 410 to 500. This is the single largest increase of any state. उसके nuclear warhead में it's the single largest increase of any state in the last 1 year, and obviously ये जो increase है 90 nuclear warheads add किए चाइना ने, which clearly shows the pace of the Chinese nuclear armament. In fact, हम कह सकते हैं that China is world's fastest growing nuclear weapon state at present, and again which indicates the growing geopolitical rivalry between the United States and China in particular, and global powers rivalry in general. Besides that, जो चाइनीज़ के बारे में ये भी रिपोर्ट में कहा गया that China has also started deploying the warheads, mating of the warhead with the nuclear missiles. One thing that this report says is common among all the states of the world is that all the states are not only modernizing their nuclear technologies, particularly focusing on the delivery systems, deployments, developing different kind of technologies, but at the same time they are also trying kind of involved in geopolitical tensions and threatening each others. This report particularly mentions about the Russians either suspending or withdrawing from treaties like the new Cold Start Treaty हो, चाहे वो CTBT हो, जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं ऑन इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़, उनके हवाले से भी कोई अच्छा ट्रेंड ज़ाहिर नहीं हुआ पिछले 1 साल के अंदर। अब आते हैं नाज़रीन, इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं। व्हाट डज दिस रिपोर्ट मीन
for the world in general and particularly for the geopolitics. This report is a clear indication that the global efforts for non-proliferation, which were historically linked to Iran and North Korea, have been failing, and particularly with increased number of technology, increased number of warheads, increased deployment of the nuclear warheads, जो readiness है, high operational readiness है, उसमें increase होना, टेक्नोलॉजीज रेंज का बढ़ना, टेक्नोलॉजीज का एडवांस होना और ट्रीटीज से विड्रॉ करना या सस्पेंड करना, ऑल ऑफ दीज इंडिकेटर्स आर क्लियर इंडिकेशन दैट दुनिया जो है वो नॉन प्रोलिफरेशन के बजाय फर्दर प्रोलिफरेशन की तरफ जा रही है. न्यूक्लियर आर्म्स रेस इज ग्रोइंग रादर देन रिसीडिंग. नाउ ऑब्वियसली दिस रिपोर्ट आल्सो हाईलाइट्स कि जो इसके ट्रेंड्स की वजह है वो बुनियादी तौर पर जियो पोलिटिकल टेंशंस हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो गज़ा वॉर हो, चाहे वो साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी हो. All of the global disputes and conflicts at present, they are pushing the world towards more of the nuclear arms race. तो non-proliferation efforts जो हैं, जो post Cold War का एक hallmark थे, they were being defeated, they are being weakened by this growing nuclear arms race that is taking place currently. This report is also an indicator that the risk of a nuclear Armageddon or a nuclear war on this planet is growing. Mainly because of the fact, not because the states are developing nuclear weapons, but also because the states are trying to do two things. One, they are trying to deploy the warheads on the missiles, which increases the risk of the potential use of nuclear warheads. Besides that, this report also suggests that states are developing non-strategic nuclear weapons, and particularly they focus on Pakistan and Russia, that they are developing non-strategic nuclear weapons. In other words, they are using what we call the battlefield use nuclear weapons, which are highly likely to be used in an armed conflict rather than a nuclear conflict. So, जो states हैं, they are preparing for the eventual use of nuclear weapons in an actual battlefield rather than using them as a deterrence against their enemy. So, this means that the risk of a nuclear war in global politics is increasing. और उसके again हम indicators देख चुके हैं जिसका इशारा भी है इस report के अंदर, that the Russians have threatened to use the nuclear warheads against nuclear weapons against Ukraine. Pakistan has been threatening the same against India, particularly in the wake of Indians threatening to invade Azad Kashmir and threatening to block Pakistani rivers. So a kind of threat of actual nuclear war जो है वो increase कर रहा है. This report is a very important testament. Last but not the least, this report also says very much about the failure of international nuclear diplomacy, where the international nuclear diplomacy has failed to convince states not to develop more nuclear weapons or not to advance the technologies or at least attempting to do such kind of endeavors. International nuclear diplomacy is on the decline, mainly because of the geopolitical tensions taking place at the different regions as well as at the global scale. So, to conclude, नाज़रीन, अगर हम कहें कि ये रिपोर्ट एक alarming report है for the international security, this is definitely an alarming report for the international security. This is an eye-opener not just for the middle powers but also the global powers. And because of increased nuclear proliferation, vertical nuclear proliferation, nuclear arms race among the global powers, it is likely that those middle powers who do not have their nuclear weapons but somehow they have the reluctant desire to have nuclear weapons, they will be emboldened to go for the nuclear options, because those who already have it, they are trying to not end those nuclear weapons, rather they are trying to strengthen those nuclear weapons. So the dream of having a nuclear zero, like for the presidents like President Barack Obama and Joe Biden भी कह चुके हैं वो nuclear zero की support करते हैं, but जो nuclear zero की possibilities हैं, जो ICAN movements हैं, international campaign for abolishing nuclear weapons, all of those campaigns are being pushed behind the curtain, and those hawks who want to promote the nuclear threats to each other, who want to promote the armament and the nuclear armament, they are winning this race of armament against those who want to abolish it. Let's hope that this report is actually an eye-opener for those policymakers who have to take decisions on nuclear diplomacies as well as other related matters. Thank you so much, Nazin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.